Hi, so this is Physics Chapter 4 Moving Charges and Magnetism Class 12, and we have 13 questions in this exercise in a book, and I've covered all of that here. I'll explain this, the solutions I have put here. So the question says circular coil of wire consisting of 100 turns, each of radius 8 centimeters, carries a current 0.4 ampere. What is the magnitude of magnetic field? Now it's a clear and plain application of the formula. Now the formula for the magnetic field in this is B is equal to mu 0 by 4 pi 2 pi NL by R. Okay, N is the number 2 pi Ni by R. N is the number of turns and R is the radius. Okay, so we have mu 0 value 4.21 minus 7. We'll put all these values and we arrive at this. A very plain, simple, I don't know. Just I will put it as one mark question only. So 3.14 into 21 minus 4 Tesla. Next one is 4.2. Along a straight wire carries a current of 35 amperes. So you have a long straight wire and this is this kind of situation. Okay, and you have to find, this is a long straight wire in which current I is flowing, and you have to find the magnetic field here because of this long straight wire. Now you know the direction. How do you find direction of such magnetic field is you swirl your finger, show the thumb as your right hand thumb as the direction of the current. The way your finger swirl is the direction of the magnetic field. But that question is not asked. What is the magnitude is what they are asking. So magnitude of the field would be, there is a formula which will use mu 0 by 4 pi 2 I by R, and we have all of these values given. We'll put this. Okay, so that is this here. If you see mu 0 by 4 pi 2 I by R, so that is 4 pi into minus 7 by 4 pi into 35 by this. If this wire was half, then and this point B was at the starting point of the wire, then this would have been mu 0 by 4 pi I by R. Okay, so actually the formula is sin theta 1 plus theta 2, where theta 1 is so in case you have a wire element in which wire is passing, then you will use mu 0 by 4 pi sin theta 1 plus sin theta 2. Now in this case it's infinitely long wire, so sin theta is 90. Okay, and that's how you arrive at mu 0 by 4 pi into 2I by R. If theta 2 is 0, then it becomes mu 0 by 4 pi sin 90 by R, which is I by R. Okay, so you can refer to the textbook. There could be n number of scenarios in which the similar question can be asked. Moving on to question number 4.3. A long straight wire in the horizontal plane carries a current of 50 ampere in north to south direction. A long straight wire in the horizontal plane carries a current of 50 ampere in north to south direction. Give the magnitude and direction of B at a point 2.5 meter east of the wire. Okay, so long straight wire. Let's say this is north south. This is traditionally what we take. So this will be east west, right? So north to south direction is current. So in this direction we have current. We have to give the magnitude and direction. Now if you see, we point our thumb towards the current. Use your right hand. Okay, and then fingers swirl around from west to east. So that is the direction of the magnetic field, right? So on this side, this will be inside the page. On this side, this will be outside the page. Okay, east of the wire. So east of the wire, it will be outside the page. Okay, vertically upwards. Yeah, and formula remains same, mu 0 by 4 pi 2 I by R. So this I explained to before also, the direction part. So I'll try I'll try make a diagram. So say this is your thumb, and then these are your other fingers. Okay, so if your thumb points towards the current direction, then the way fingers move, okay, swirl around the wire. Just hold the wire as if you are holding a small circular rod. So how will the fingers swirl? Fingers are swirling in a way that it's appearing to be coming out of east और वेस्ट में जा रही है और ईस्ट से आ रही है. मतलब ईस्ट से आ रही है मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम ऐसे शो करेंगे, राइट? और वेस्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेज, राइट? तो ऐसे शो करते हैं क्रॉस क्रॉस.
So vertically upward, vertically downward, whatever way you want to write, coming out of the page, right? And value will find out using the same formula. We have I, we have R, we have everything, So B is equal to mu 0 4 pi 2 over R. So the value will find. Okay. Now the next. A horizontal overhead power line carries a current of 90 ampere in east to west direction. What is the magnitude and direction of the magnetic field? Again, similar question. Okay, so we will see. So say this is the wire, and you have east here, and you have west here, and you have north here, and you have south here. तो क्या कह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल overhead पावर लाइन कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर ईस्ट टू वेस्ट जा रही करंट. ओके, आप बच्चों देखो कैसे जा रही करंट, इधर जा रही है. तो आपको मैग्नीट्यूड तो आप फार्मूले से निकाल लोगे. ओके, उस पर इतना फोकस नहीं हूँ. डायरेक्शन में अक्सर गलती कर जाते हैं बच्चे. तो डायरेक्शन की बात करते हैं. डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का. अब हमें उसके लिए पोजीशन देखनी, कहाँ पर देखनी डायरेक्शन. तो बिलो द लाइन 1.5 मीटर, यहाँ पर क्या डायरेक्शन होगी. अब आप पॉइंट करिए, राइट हैंड आपका जो राइट हैंड है उसका थंब आप इस डायरेक्शन में पॉइंट करिए. तो फिंगर्स कैसे जाएंगी अगर आप वायर को होल्ड करना है, राइट. तो फिंगर्स ऐसे ऐसे जाएंगी, राइट. ये आपका हैंड है. ओके, तो किस डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब इट इज एज इफ कमिंग आउट ऑफ द पेज एंड गोइंग इनसाइड द पेज. ओके, सो इट्स एक्चुअली अप, राइट. So direction of the this thing towards the south, correct, towards the south. So it is going like this from inside, it's coming out of this. Okay, so we have to put it in the mark of arrows across. It's looking like magnetic field is coming out of it, and here its magnetic field is going inside. And fingers show as if it is coming from south. Towards south it is going, from north to south. So that is the magnetic field. Yeah. Now we'll move on to next question. So we put the values mu 0 by 4 pi 2I by R, same formula. That is mu is 4 pi into 10 minus 7 by 4 pi into 2 into 90 by 1.5, that is 1.2 into 10 to the power minus 5 Tesla. Right? Next is what is the magnitude of magnetic force per unit length on a wire carrying a current of 8 ampere and making angle 30 degree, direction of uniform magnetic field of 0.15 Tesla. आपको क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है मैग्नेटिक फोर्स का पर यूनिट लेंथ. ओके, तो आप देखिए क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स, आईडीएल क्रॉस बी होता है, राइट. अब आपको यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट के लिए एंगल दिया हुआ है. तो एंगल दिया हुआ है कि वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 8 एम्पियर. तो ये है मेरा वायर. ओके, इट इज कैरिंग ए करंट ऑफ 8 एम्पियर और ये जो है 30 डिग्री एंगल बना रहा है फ्रॉम द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये बी हो गया. ओके, बी इज इन दिस डायरेक्शन, 30 डिग्री पर है. ओके, 30 डिग्री, राइट. तो आप देखिए डीएल, अगर हम एक छोटा सा एलिमेंट लें इस पर, दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द फार्मूला ILB, राइट. तो डीएल एलिमेंट जो है उसको हम क्रॉस करेंगे, डीएल क्रॉस बी विल बी, सो IDL क्रॉस बी. तो डीएल क्रॉस विल बी and then we'll integrate. So rather we'll use this formula I L cross B. Okay, so that will be, this is that cross not into. Okay, cross product होता है. तो ILB sin theta हो गया. क्रॉस के केस में हमेशा 90 डिग्री लेते हैं. द परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल. ओके, सो दिस परपेंडिकुलर कंपोनेंट. सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, इसके यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये भी है. तो ये जो कंपोनेंट है ये है आपका L sin थीटा, L sin 30, राइट. अब देखिए करंट इन द वायर इज दिस, मैग्नीट्यूड इज दिस, एंगल बिटवीन द वायर इज दिस, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ विल बी, तो IB sin थीटा, बिकॉज पर यूनिट लेंथ जब आ जाएगी तो IDL क्रॉस B ओवर DL, राइट. तो जो भी लेंथ है उसका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, केवल क्रॉस बी का मतलब रह गया. तो मतलब IDL B sin थीटा ओवर DL, राइट. दैट विल बी IB sin थीटा.
That is 0.15 into 8 into 1 into sin 30, that is equal to 0.6 Newton per meter. ओके और वो फोर्स पर यूनिट डिस्टेंस है तो न्यूटन पर मीटर विल बी द डायमेंशन. आप थोड़ा ध्यान रखना. 4.6 क्या है? 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर प्लेस्ड इनसाइड ए सोलेनोइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस. मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज गिवन. तो आपको यहाँ पर एक सोलेनोइड दी हुई है. मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं बनता है. ओके सो वी विल से दिस इज द करंट वायर, राइट. और इसमें हमारे 10 एम्पियर करंट है. तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता है? इस डायरेक्शन में होता है सोलेनोइड का. दिस विल बी राइट, करेक्ट. तो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑन द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड एंड करंट इज गोइंग एट 90 डिग्री. तो क्या होगा? आई एल बी साइन 90 हो गया, राइट. तो आपके पास आई है, आपके पास बी है, ओके यहाँ पर, और आपके पास एल है. ओके तो क्या होगा? आई एल बी साइन 90, दैट इज 8.1 × 10⁻² न्यूटन. ओके अगर ये एक्सिस पर होता है ये वायर तो क्या होता? डी एल और बी विच इज लेंथ एंड करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन, तो साइन 0 मतलब 0 हो जाता. तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स फील्ड की वजह से नहीं लगता. इज इट क्लियर? या नेक्स्ट 4.7 पे आ जाइए. कितने इजी क्वेश्चन हैं, बहुत ही इजी. आई विश आपके एग्जाम में भी ऐसी क्वेश्चन आए, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना. 4.7 है. 2 लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स ए एंड बी कैरिंग करंट दिस एंड दिस इन द सेम डायरेक्शन आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. एस्टिमेट द फोर्स इन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ द वायर, राइट. अब आपने ये पढ़ा है क्या होता है, चलिए करके दिखाते हैं. इसको थोड़ा डिराइव करके बताता हूँ मैं आपको. ये हमारे 2 वायर हैं, ओके, और ये पैरेलल में जा रहे हैं. एक में करंट जा रहा है I1, एक में करंट जा रहा है I2, राइट. अभी जो I1 करंट जा रहा है सेम डायरेक्शन में तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, राइट, है ना. अब आप उसका रीज़न देख लीजिए. मान लीजिए हम I1 की वजह से कंसीडर करते हैं, तो I1 की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा. तो हम अपना थंब दिखाते हैं I1 की डायरेक्शन में, तो हमारी जो फिंगर्स हैं राइट हैंड की वो स्वेल करती हैं इनसाइड द पेज. इस डायरेक्शन में देखिए यहाँ पर क्या होगा? इट विल बी इनसाइड द पेज. तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेज हो गया और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द पेज हो गया, राइट. और अब आप देखिए ये वाला जो I2 वायर है, इस पर इस मैग्नेटिक फील्ड जो I1 का मैग्नेटिक फील्ड था, हम इसको भी I1 लिखते हैं, की वजह से क्या फोर्स लगा? तो आपको पता है फोर्स इज QVB, ओके, और ILB, राइट. तो आप देखिए I इस डायरेक्शन में है और B आपका सेकंड वेक्टर इज इनसाइड, ओके. तो आप राइट हैंड रूल यूज करिए. जो फर्स्ट फिंगर है दैट शोज द फर्स्ट वेक्टर व्हिच इज करंट, मतलब I2, और जो सेकंड फिंगर है दैट शोज द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इनसाइड द पेज, ओके. तो आप देखिए आपका जो थंब है दैट पॉइंट्स टू द फोर्स डायरेक्शन. तो थंब किधर आता है? थंब इधर आता है. मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ. ये आपकी फर्स्ट फिंगर हो गई और ये आपकी सेकंड फिंगर हो गई, राइट. 1 2 और बाकी 3 फिंगर भी हुई तो वो भी दिखानी पड़ेंगी, ओके. बाकी 2 फिंगर हो गई. ये एक लगा दी, ये एक लगा दी, और ये जो थंब है ये आपका इस डायरेक्शन में पॉइंट करता है. राइट हैंड की बात हो रही है. ये आपका फर्स्ट वेक्टर हो गया करंट I2, ये इनसाइड, ये अंदर को जा रहा है इनसाइड द पेज. ये आपका B1 हो गया, B I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है. तो थंब आपका क्या दिखाता है? ये फोर्स दिखाता है रिजल्टेंट. तो फोर्स किस डायरेक्शन में आ रहा है? फोर्स मतलब ये उसको अट्रैक्ट कर रहा है. इसी तरह आप I2 की वजह से फील्ड निकालो और I1 पे देखो, वो भी I1 को अट्रैक्ट करेगा, राइट. तो फॉर्मूला क्या हो गया? ILB हो गया. B क्या हो गया? μ0/4π × 2I/r, करेक्ट. तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे μ0/4π 2I1/r को I2 L से, ओके, राइट. तो L आपका दिया हुआ है यहाँ 10 और B वो वहाँ से यूज कर लो तो ये आ जाएगा μ0I1I2L/2πr, ओके. R उनके बीच की डिस्टेंस है, करेक्ट. तो फार्मूला आप डिराइव भी कर सकते थे, बट अगर आपको याद है तो और अच्छी बात है. और यहाँ पर हम वैल्यू उसकी लगा देंगे. 4.10⁻⁷ 2π × 0.04 R है और फर्स्ट में करंट है 8 एम्पियर, सेकंड में 5 है, और लेंथ जो है हमारी
wire length है 0.1 meters, 10 centimeters 0.1 meter. Take everything in SI unit. Okay, if you are doing, अगर आप SI यूनिट में क्वेश्चन कर रहे हैं और अगर आप CGS में कर रहे हैं तो सारी यूनिट CGS में होने चाहिए. जो मोस्टली SI यूनिट्स में करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं. ओके, तो आंसर आ गया 20 - 5 न्यूटन. और अगर यही I1 की डायरेक्शन दूसरी होती तो वो I2 को रिपेल करता. अगर I1 के करंट की डायरेक्शन ये होती तो वो I2 को रिपेल करता, तो फोर्स का डायरेक्शन बदल जाता और क्वांटिटी सेम रहती. ओके, और अगर हम पूछते हैं कि I1 का अगर लेंथ लेते 0.1 मीटर तो कितना फोर्स लगेगा, तब भी इतना ही फोर्स लगता. बिकॉज आप देखिए यहाँ पे इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ I1 I2 एंड द लेंथ एलिमेंट. ओके, इट डजंट रियली मैटर कि I1 से लगा फोर्स या दोनों, बोथ द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट. ओके, सो यहाँ ये इसको पुल कर रहा है, ये इसको पुल कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 4.8 पे आते हैं. ए क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज 5 लेयर्स ऑफ बाइंडिंग्स ऑफ 400 टर्न्स ईच. तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाते हैं. ओके, द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड इज 1.8 सेंटीमीटर. डायमीटर दिया हुआ और आपको क्या दिया हुआ, करंट दी हुई है. राइट, तो अब आपका फार्मूला है इसका μ0 Ni/L. तो आपको फाइंड करना मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड. राइट, ये फार्मूला यूज होता है. तो आपको अगर 4 लेयर में वाइंडिंग दी है, मतलब क्या हुआ, आप टर्न के ऊपर टर्न के ऊपर टर्न, यू गॉट माय पॉइंट. एन विल बिकम 5 इंटू 5 लेयर्स है ना, इंटू 400, तो वो 2000 टर्न्स हो गए. दैट्स इट, दैट वाज द ओनली ट्रिक इन दिस क्वेश्चन. ओके, एंड डायमीटर आपको दिया हो तो डायमीटर से रेडियस लेंगे. करंट कैरिड इज 8 एम्पियर, तो आई आपको दिया हुआ है. राइट, ओके, diameter of the solenoid is 1.8 centimeter and current is this, side B 80 centimeter length है. ओके, 80 centimeter long, तो एक्चुअली 0.8 मीटर. तो इट रियली डजंट मैटर, यू नो, कि वहाँ पर ये इसका क्या रोल है. 0.018 magnetic field inside solenoid center is given by this, where mu is equal to this in the magnetic field. तो उसका कोई रोल नहीं है डायमीटर का इस फार्मूला में. राइट, करंट कैरिड बाय सोलेनॉइड दिया हुआ आपको, तो 4.10⁻⁷ 2000 टर्न्स है, 8 एम्पियर करंट है, 0.8 जो है उसकी लेंथ है. ओके, नियर इट सेंटर इज दिस. नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ डायमीटर का रोल नहीं था. वी वर टेकिंग इट आउटसाइड एट सम पॉइंट एंड वुड हैव कंसीडर्ड. So next is a square coil of side 10 centimeter consists of 20 turns and carries a current of 12 ampere. The coil is suspended vertically and the normal to the plane of the coil makes an angle 30 degrees. Direction is from horizontal magnetic field of this. What is the magnitude of torque experienced by the coil? A square coil दिया हुआ, side 10 centimeter consists of 20 turns. Okay. So let's say ये है square coil. Okay, इसमें 20 turns हैं. Right. Okay, now back to question 4.9. Square coil of side 10 centimeter consists of 20 turns. Right. So I'll take the pen. Okay. So this is the coil of 10 centimeters. It has 20 turns and it carries a current of 12 ampere. So you have I, you have N, and you have A, all three available, right? And it makes an angle of 30 degrees, so that is sin theta. So theta is 30 degrees, right? With the direction of uniform horizontal magnetic field, magnitude 0.80. So you have B also. यहाँ आपका B आ गया. तो आपके पास B है, N है, A, I है और theta भी है. Now you know the torque is equal to NBIA sin theta, right? So torque is NBIA sin theta. And we'll put these values and we'll arrive at the torque. Torque is equal to 0.96 Newton meter. Okay, so very easy question, I would term it. Now we'll go further down. We have next question 4.1. 4.1 says that the moving coil meter, there are two moving coil meters, M1 and M2. So here I have shown you a moving coil meter.
Yeah. In the moving coil meter, what happens is you have the same concept of NBIA, okay, and here they have used NBIA is a torque, right? And that is equal to what? So there's a torsion constant K and the angle of deflection, that is theta. So now, what is your sensitivity? Current sensitivity is read as theta over I, which is NBA over K, right? I over theta, theta over I is equal to NBA over K. Perfect. So this is called current sensitivity. Okay. So now in first you have two coil moving coil meters. Both the values are given. Resistance R1, number of turns N1, area of cross section A1, and magnetic field B1. Spring constant K1 is presumed to be K. And you have another moving coil meter. You have R2 given, N2 given, A2 given, B2 given, and K2 is equal to K. They have the same spring constant, right? Or K2 they have taken. I don't know. Okay, K2. So yeah. So what will be current sensitivity of M1? That will be this, using this formula, and current sensitivity of galvanometer 2 will be this. So the ratio will be N2 B2 by N1 B1 A2 A1, right? Because K1 and K2 are sort of cancelling out each other. I think somewhere in the question they are saying spring constants are same. Let me read it. Identical, yes, this is given. So they have given that K1 is equal to K2 is equal to K, right? So that gets cancelled out. Okay, so next is voltage sensitivity. Okay, so we are first of all solving for ratio of the current sensitivity. So it will actually become K, if K cancels out, it becomes N1 B1 A1 by N2 B2 A2, right? So that we have used. So I2 by IS2 by IS1 will be N2 B2 A2 by N1 B1 A1. Very simple. So you got 1.4 here. Next is voltage sensitivity. We know B is equal to I by R, right? So Vs2 will be Is1, which is current sensitivity, divided by R1, and voltage sensitivity of 2 will be Is2 by R2. Correct? Now what you do is you use these values or use straight formula. Right? So forget K1, K2, I'll directly do Vs2 by Bs1 is equal to Is2 by Is1 into R2 by R1. Right? So simply R2 by R1, the ratio is 1.4, so 1.4 cancels out 1.4, you get 1. Okay, or you use the full formula and do it, whatever. Next question, 4.11. In a chamber, the uniform magnetic field of 6.5 G. G is 10 to power 4 Tesla. Okay, that's 4. Okay, minus 4. In a uniform magnetic field 6.5 G, magnetic field is maintained. Electron is shot into the field with the speed of this. Normal to the field. Explain by the path of an electron in a circle. Determine the radius. Now, okay. Now, so the magnetic field is given here. Electron is shot into the field with the speed of this. So this is the electron being shot. Presuming this is the chamber, right? Now what happens is that we know that a force works on it, okay, which is Q. Q is the charge, okay, presuming we are putting a positive charge and negative charge, that we'll get into later. It's actually V cross B. So force is equal to V cross B. That means force is a dot product of velocity and magnetic field, right? Now magnetic field is uniform. They are not saying the direction of the field. By, okay, whatever. So magnetic field may be inside the page or outside the page, okay, and velocity, as you see, is in the y direction. So obviously the resultant force will be perpendicular to both the velocity and the magnetic field. Now you know that any object that is being worked by a force which is at 90 degree to its velocity, आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा है, राइट? उसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी है फिक्स, राइट, और उस पर एक फोर्स काम करता है टुवर्ड्स द सेंटर में भी. आप
एक स्टोन को एक रोप से बांध के चलाओ या जो भी करो, ओके, तो उस केस में क्या होता है, फोर्स का भी डायरेक्शन चेंज होता रहता है, वेलोसिटी का भी डायरेक्शन चेंज होता रहता है. सो आफ्टर डेल्टा टी, velocity is in this direction and force in this direction. So we can say that F is equal to dv by dt. So there is a uniform acceleration that is achieved, which is radially inwards towards the center, which is called centripetal force. Okay. So when the force is at 90 degree from the velocity, motion will always be circular, because what it will do is it will change the direction of the velocity. It will not directly change the speed or the magnitude of velocity will not change, the direction of velocity changes. That's why it is circular. So that part I have answered. Now first question is determine the radius of the circular orbit. तो आपको पता है mv square by r, देखिए यही फार्मूला इन्होंने लगाया है, mv square by r is equal to evb sin theta, right? Now here theta is 90 degree, right? So F will be EBB. E is electron charge and V is velocity and B is the field. By putting all the values you get EBB sin EBB is equal to mv square by r. तो B से भी कैंसिल हो गया, so B is equal to R आपको आ गया mv by EB. तो sin थीटा इन्होंने अभी तक यहाँ लगाया हुआ है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है. थीटा is already 90 and sin theta is sin 90 is 1, right? Okay. So ये हो गया mv by EB और आप उसकी वैल्यूज लगा लीजिए, आपको रेडियस मिल जाएगी. Okay. Next, 4.2 in exercise 4.11, I mean the same question उसी से related है. Obtain the frequency. Now frequency of revolution will be, अगर उसकी velocity v है तो क्या होगा, what is the length of a circle? Length of a circle is, I mean the perimeter of the circle is 2 pi r, right? तो एक पूरा राउंड करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 2 pi r by v, that is equal to t, करेक्ट. हमें फ्रीक्वेंसी पता करनी है एंड फ्रीक्वेंसी इज 1/t. इन 1 सेकेंड हाउ मेनी रिवॉल्यूशन विल हैपन, दैट इज v by 2 pi r. तो हमारे पास v भी है r भी है, राइट? तो हमने वो वैल्यू यहाँ लगा दी, या आप यहाँ से इन्होंने फार्मूला यूज किया mv स्क्वायर बाई आर इक्वल टू evb, तो ev इज इक्वल टू mv बाई आर आर ओमेगा. इतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं थी. हमारे पास वेलोसिटी है, हमारे पास रेडियस है, रेडियस हमने अभी ऊपर निकाला था, राइट, है ना? ये रही रेडियस भी, वैल्यू v by 2 pi r. ओके. हाँ, इन्होंने क्या लिया है, v इज इक्वल टू b, सो b इज इक्वल टू b by 2 pi m. स्पीड इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, 1 second of the question. Obtain the frequency of revolution of the electron in a circular orbit. अच्छा, does the answer depend on the speed of the electron? No. So you see that we have mv square by r is equal to evb. So this v is cancelled with this v, okay. So we have v is equal to eb by ebr by m. तो आप ये वैल्यू यहाँ पर लगा दीजिए, राइट? तो फ्रीक्वेंसी बिकम्स ebr by m into 2 pi, एंड एक आर यहाँ भी है तो आर से आर दिया, तो EB by 2 pi m इज द फ्रिक्वेंसी, राइट? तो आप देखिए इसमें वेलोसिटी कहीं भी नहीं आ रहा है, तो फ्रिक्वेंसी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ओके. हाँ, उन्होंने आर ओमेगा से किया है v स्क्वायर बाई आर, सो EB इज इक्वल टू mv बाई आर, सो m r ओमेगा इज इक्वल टू दिस, r इज इक्वल टू b by 2 pi m. मेरा भी वही आया ना, b by 2 pi m, राइट? तो आप ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, बोथ आर सेम, राइट? इतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है. इन्होंने उसमें जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी लगा दिया है, मैंने अवॉइड किया है, सीधे सीधे 2 स्टेप में ये डिराइव किया है. ओके, ये देखिए. ओके, आई विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. A circular coil of 30 turns and radius 8 centimeters carrying a current of, last question is exercise का, current of 6 ampere suspended vertically in a uniform horizontal magnetic field of magnitude 1 Tesla.
द फील्ड लाइन्स मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड नॉर्मल ऑन द कॉइल, दैट मीन्स थीटा दिया हुआ है आपको 60 डिग्री। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंटर काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग। तो यहाँ एक्चुअली आपसे टॉर्क पूछ रहे हैं, तो एन बी आई ए साइन थीटा का फॉर्मूला आप लगा दीजिए। करेक्ट। नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिया हुआ है, रेडियस आपको दिया हुआ है, एरिया तो कॉइल इज पाई आर स्क्वायर, ये आपको पता है। ओके, तो यहाँ से आपने निकाल लिया। करंट फ्लोइंग इन द कॉइल आपको दिया हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इज 1 टेस्ला। तो हमने एन बी आई ए साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया, तो ये हो गया रिस्टोरिंग टॉर्क। तो अगर हम ये रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएं तो कॉइल विल नॉट मूव। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, would your answer change if the circular coil were replaced by a planar coil of some irregular shape that includes the same area? No, because हमारे फार्मूला में शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता, एरिया लगता है। इट इज द एरिया। ओके, एन बी आई ए, सो द एरिया इज सेम, द वैल्यू ऑफ टॉर्क विल बी सेम। ओके, और एरिया जब हम बात करते हैं तो एरिया वेक्टर की बात करते हैं। ओके, एन बी आई ए साइन थीटा, राइट, करेक्ट। Correct. Now that was the end of the chapter. So this chapter is over. We'll do one more chapter, tomorrow. Thank you. Thanks for watching, and please subscribe. We will add all the NCERT exercises maybe in next 1.5 months. Thank you.